So hi guys, I'm Asad Kothari. Welcome to this video. And this video is about how to use the glossary. Glossary is another resource that I have prepared with my heart. And this is also a wonderful resource. I'll share my iPad screen. चाहे तुम मुझसे ऑनलाइन पढ़े हो या फिजिकल पढ़े हो, तुम्हारे पास जो हमारा रिसोर्सेज वाला फोल्डर है उसमें एक सब फोल्डर है. Let's say AS level resources or A2 or O levels in whatever level you are. Let's say AS level है, तो इसमें अगर तुम चेक करोगे ये थर्ड फोल्डर ग्लॉसरी का है. ग्लॉसरी में जाओगे, ग्लॉसरी की फाइल ओपन करोगे तो तुम वो ग्लॉसरी जैसी खुलेगी ना तो उसमें डेफिनेशन, द टर्मिनोलॉजीज एंड देयर डेफिनेशंस ऑफ ईच चैप्टर. एंड आई थिंक सो ग्लॉसरी इज अ वेरी गुड रिसोर्स बिकॉज जो हमारे पेपर्स में नॉलेज मार्क्स होते हैं वो नॉलेज मार्क्स को कैप्चर करने का तरीका ये ग्लॉसरी है. This and yes, there are a lot of definitions that you need to learn. That's true fact of our syllabus. But yeah, this is the glossary that you can use and use it very wisely. And definitely, at least अगर पढ़ना शुरू करो तो at least एक वक्त में एक chapter जरूर पढ़ो. ऐसा नहीं कि 2 terms पढ़ो फिर ना पढ़ो, right? So you have to do at least one chapter in one go. So yeah, this is what the glossary is, and I hope you like our resource. Bye bye.